Now we have application of equilibrium constant. So important features of equilibrium constant. Expression for equilibrium constant is applicable only when concentration of reactants and products have attained constant value at equilibrium state. Okay, it is valid only when they have attained equilibrium. Equilibrium ka gana is not allowed. Okay, the value of equilibrium constant is independent of initial value concentration of reactants and products. Nowhere you see the initial concentration. हर जगह हम सिर्फ equilibrium concentration की ही बात कर रहे हैं. ठीक है, Kc is temperature dependent, having one unique value for a reaction at a given temperature. Kc जो है हमेशा टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है. ठीक है, एक गिवन टेम्परेचर के लिए उसकी जो वैल्यू है एकदम यूनिक होती है. द इक्वेशन कांस्टेंट फॉर द रिवर्स रिएक्शन इज इक्वल टू inverse of the equation constant for the forward reaction. ठीक है, equation constant for reverse reaction is basically equal to the equation constant for forward reaction. ठीक है, inverse. Now the equilibrium constant K for a reaction is related to the equilibrium constant of the corresponding reaction whose equation is obtained by multiplying or dividing the equation for the original reaction by a small integer. ठीक है, समझ गए. बिकॉज एन से अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो सबकी पावर्स को एन से मल्टीप्लाई कर दो तो इस तरीके से वो रिलेटेड हो जाते हैं. नाउ एप्लीकेशन. फर्स्ट इज प्रिडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन. न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc इंडिकेट्स द एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन, बट इंपॉर्टेंट थिंग इज इट डज नॉट गिव अस इन्फो अबाउट द रेट एट विच इक्विलिब्रियम इज रीच्ड. ठीक है, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन बताती है उसकी मैग्नीट्यूड, बट ये नहीं बताती कि किस रेट से कितनी स्पीड से पहुँचा. बहुत जल्दी पहुँच गया, बहुत जैसे ना कोई इंसान एम्स दिल्ली में पढ़ रहा है. ठीक है, अब वो इंसान बंदा पहली अटैम्प्ट में पहुंच गया उधर कि वो 5वें-6वें अटैम्प्ट में पहुंचा, ये हमें पता नहीं लगता उसे देख के. उसको वो एम्स दिल्ली में पढ़ रहा है, इतने इन्फो से हमें पता चलता है कि ये बंदा एम्स दिल्ली में पढ़ रहा है, और इसका कौन सा अटैम्प्ट है पता नहीं चलता ना. कितने देर में कितने टाइम लगा कि उस इक्विलिब्रियम उस सही कंडीशन पे पहुंचा है, वी डोंट नो, राइट. तो यही केसी के साथ भी प्रॉब्लम है. मैग्नीट्यूड ऑफ Kc और Kp इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स बिकॉज प्रोडक्ट्स इज ऑन द टॉप and is inversely proportional to concentration of reactants. High value of K means higher concentration of products and vice versa. Following generalizations can be made. If Kc is greater than 10 raised to the power 3, products predominate over reactants, hence the reaction proceeds nearly to completion. अगर products ज़्यादा हैं तो reaction almost complete हो चुकी है because उसमें products बहुत ज़्यादा हैं. ठीक है, if Kc is less than 10 raised to the power minus 3, reactants predominate over products. मतलब कि reaction तो rarely proceed कर रही है, it is not even moving. If Kc is in the range of 10 to the minus 3 to 10 to the 3, appreciable concentration of both reactants and products are present. तो यहाँ पे reactants, यहाँ पे products. If it's 10 raised to the power minus 3, it is over here. So it has to move in the forward direction to reach equilibrium. If it's 10 to the 3, it's over here. It has to reach in the backward direction to reach equilibrium. Reactants की तरफ. So if Kc is in this रेंज देन एप्रिशिएबल. दोनों की जो कॉन्सेंट्रेशन है ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, ऑलमोस्ट सेम. सो 10 raised to minus 3 रिएक्शन ट्राइज टू रीच इक्विलिब्रियम. Kc कम है, प्रोडक्ट्स कम है, हेंस रिएक्टेंट्स रेयरली चेंज होते हैं प्रोडक्ट्स में, रिएक्शन डजंट प्रोसीड. A प्लस बी रिएक्टेंट्स गिव C प्लस डी प्रोडक्ट्स. So 10 raised to 3 reaction tries to reach equilibrium. Kc ज़्यादा है, प्रोडक्ट ज़्यादा है, hence reaction ज़्यादा है. इनको प्रोडक्ट्स a lot and reaction almost proceeds to completion. तो वो क्या उल्टा चलेगा जिससे reactants बने. Second आता है predicting the direction of the reaction. For this purpose, first we calculate reactant quotient Q. Qc is same as equilibrium constant Kc except that concentration Qc are pressure are not necessarily equilibrium values. ठीक है, Qc एक नॉर्मल बंदे का है, Kc सिर्फ equilibrium है. Qp same as partial pressure except that pressure and Qp aren't necessarily equilibrium values. If Qc is greater than Kc, in particular any instant you have chosen Qc, if Qc turns out to be greater than Kc, then reaction is in direction of reactants. मतलब Qc जो है वो ही Kc से बड़ा है ना. Qc की वैल्यू Kc से बड़ी है तो रिएक्शन इज इन डायरेक्शन ऑफ रिएक्टेंट. मतलब Qc जो है, अगर देखो तुमने किसी भी पॉइंट पे रैंडमली तुमने जो है रिएक्टेंट क्वेश्चन को चूज़ कर लिया, तुमने उस पॉइंट पे बोल दिया कि यहाँ का रिएक्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, तो अगर उसकी वैल्यू जो है Kc से ज़्यादा है, इसका मतलब है कि वो काफ़ी ज़्यादा है क्वांटिटी में, प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, वो Kc से ज़्यादा है, Kc से दूर है, Kc से राइट साइड में है, तो प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं. इट हैज़ टू प्रोसीड इन द डायरेक्शन ऑफ रिएक्टेंट्स. And if Kc is greater than Qc, if Qc is less than Kc, then reaction is in direction of products. जो
QC जो QC है वो अगर KC से कम है तो क्या है कि रिएक्टेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, प्रोडक्ट्स बिल्कुल है ही नहीं. QC is towards the left, so reaction will proceed in the direction of products to reach KC, and if QC equals KC then reaction mixture is already in equilibrium. ये ऐसे रहता है. ये इसका बनाया. You want to see, you can see this little line graph sort of a thing. यहाँ पे KC is greater than QC, यहाँ पे QC is greater than KC. Here you see QC KC की तरफ जा रहा है, QC से KC की तरफ जा रहा है. ये हमने एक बनाया है. ठीक है. Lastly, you have calculating equilibrium concentration. To know equilibrium concentration and equilibrium, following steps will be followed. Write balanced equation for reaction. ठीक है. पहली बात, रिएक्शन के लिए एक बैलेंस्ड इक्वेशन लिखो. सेकंड बात क्या है, अंडर दिस इक्वेशन मेक अ लिस्ट फॉर ईच सब्सटेंस इन्वॉल्व्ड इन द रिएक्शन. इसी इक्वेशन के अंदर क्या करो, तुम हर एक सब्सटेंस की एक लिस्ट बना लो. Initial concentration, change in concentration or going to equilibrium concentration, and substitute equilibrium concentration into the equation for reaction and solve for x. Calculate equilibrium concentration from value of x and check your result by substituting them in equation. ये हम आगे पढ़ेंगे सही से. तो just right now I have just read it like this. Next we will see factors affecting equilibrium. There's a lot. Now look at this. Okay, so factors affecting equilibria. The first thing that affects equilibria is your Le-Chatelier's principle. It states that a change in any of the factors that determine equilibrium conditions of a system will cause the system to change in such a manner so as to counteract the effect of the change. ठीक है. अगर कोई भी equilibrium constant of a system, any change on a factor, a change in any one of the factors that determine the equilibrium conditions of a system will cause the system to change in such a manner so as to counteract the effect of the change. In other words, if a disturbance is introduced in an equilibrium mixture, it will behave so as to undo the disturbance and re-establish the equilibrium. कोई भी अगर equilibrium से disturbance create हुई तो वो immediately उसे undo करेगा. जैसे अगर तुम्हारे 650 के प्लस मार्क्स आ रहे हैं, अचानक से तुम्हारे 500 मार्क्स आ गए, तो तुम 15 घंटे 20 घंटे 20 hours a day you will study and you will compensate for it. Now है ना, the same as Le-Chatelier's principle. Then we have factors. Effect of change in concentration. If a reaction is at equilibrium and concentration of any reactant is increased, then the equilibrium will shift in forward direction. देखो, if a reaction is at equilibrium and if concentration of any reactant is increased, reactant की concentration increase कर दी तो it will shift in forward direction. While if concentration of any product is increased, then reaction will shift in the backward direction. If the concentration of reactant and product are decreased, दोनों की concentration decrease कर दी, then the reverse happens. ठीक है. एंड और प्रोडक्ट किसी भी चीज़ का अगर तुमने कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज़ की तो रिवर्स होगा. रिएक्टेंट बढ़ा दिया तो रिएक्टेंट ख़त्म करने के लिए जल्दी प्रोडक्ट बनाएंगे, हेंस टू फॉरवर्ड डायरेक्शन में, एंड वाइस वर्सा. Effect of change in pressure. Change in pressure occurs due to change in volume. It will not have any effect if moles of reactants and products are the same. See, change in pressure occurs due to change in volume. It will not have any effect if moles of reactants and products are the same. When pressure is increased, the reaction will shift in the direction having smaller number of moles. ठीक है. तो बेसिकली प्रेशर अकेले कुछ नहीं कर सकता है. इफ़ प्रेशर इज इंक्रीज टू डिक्रीज एंड दिस विल अफेक्ट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, देन द रिएक्शन विल मूव. सो इफ यू इंक्रीज और डिक्रीज द प्रेशर विल शिफ्ट इन द डायरेक्शन हैविंग लेसर नंबर ऑफ मोल्स. जैसे जहाँ अगर तुमने प्रेशर इंक्रीज कर दिया और एक डायरेक्शन में मोल्स बहुत बढ़ गए तो वो लेस नंबर ऑफ मोल्स वाली डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा. तो यहाँ पर जैसे हमने प्रेशर इंक्रीज़ किया तो कॉन्सेंट्रेशन भी इंक्रीज़ हो गई है ना. प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन. इफ यू इंक्रीज प्रेशर इवन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस, so immediately it will shift to the direction where moles are less.
So even high pressure concentration high नहीं कर सकता. Even if you increase the pressure, you cannot increase the concentration. Immediately direction change कर लेगा moles की. This is CO2 plus 3H2 gives CH4 plus H2O. In reaction, C plus CO2 gaseous 2CO. ठीक है, एग्जाम्पल ये एक रिएक्शन लिख दिया. अब यहाँ देखो, जैसे C plus CO2 gives 2CO. If this is the reaction, when pressure is increased, reaction goes in reverse direction because number of moles of gas increase in forward direction. Forward direction में तुम देखोगे कि 2 है, यहाँ पे जो है 1 1, मतलब 1 1 ही है, तो सेपरेटली 1 है, तो यहाँ इस डायरेक्शन बैकवर्ड रिएक्शन शुरू हो जाएगा. नंबर ऑफ मोल्स जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहे हैं. सॉलिड्स एंड लिक्विड रिमेन अनअफेक्टेड बाय प्रेशर चेंज एज देयर वॉल्यूम्स कैन नॉट बी चेंज. उनकी वॉल्यूम्स कैन नॉट बी चेंज. ये तुम्हें पता है कि उनकी वॉल्यूम्स को चेंज नहीं कर सकते, so they are not affected by pressure change. Effect of inert gas addition. If the volume is kept constant, see, make sure you're keeping the volume constant. If you keep volume constant, then concentration also remains constant. And if volume is kept constant and inert gas such as argon is added, which doesn't take part in the reaction, the equilibrium remains undisturbed. It is because addition of an inert gas at constant volume doesn't change the partial pressure or molar concentration of the substance involved in the reaction. The reaction quotient changes only if the added gas is a reactant or product that is involved in the reaction. If you add an inert gas which has nothing to do with the reaction and you're also keeping the volume constant, which means the molar concentration and partial pressure is constant, it will not change anything. One more. Inert gas addition. Next, let's take a look at this. Effect of catalyst. Adding a catalyst to a reaction at equilibrium has no effect on the position of equilibrium. However, it allows equilibrium to be reached more quickly or established at lower temperature, which makes reaction more profitable. There's no change if you add a catalyst. The only thing is that equilibrium पे तो कोई change नहीं आएगा. But if you're adding it when the reaction is going on and is still not reached equilibrium, then it will reach equilibrium more quickly. That's all, and it can make it more profitable. It can be of profit. Effect of temperature. Kp and Kc are constant at constant temperature but vary as temperature changes. देखो constant temperature पे तो constant है, but with temperature change even they vary. Okay, example, H2 gaseous plus I2 gaseous gives 2HI gas. Here delta H is equal to minus 10.4. पापा थोड़ा धीरे बोलो, मैं पढ़ रही हूँ. Equal delta H equals minus 10.4 kilojoules per mole. And if delta H is equal to minus 10.4 kilojoules per mole, यहाँ पे क्या है, delta H is negative because exothermic reaction is in the forward reaction. जो forward reaction है वो exothermic है, ठीक है, तो delta H is negative. Then forward reaction is exothermic. Increasing the temperature decreases the value of the equilibrium constant, whereas when the forward reaction is endothermic, increasing the temperature increases the value of equilibrium constant. This is one thing you should remember. अब ऐसा क्यों होता है, इसका reason भी लिखा है next line में. Delta H is positive if the forward reaction is endothermic. So if you increase the temperature, क्या होता है, position of equilibrium will move in such a way as to reduce the temperature again. अगर temperature increase किया तो क्या चाहता है वो कि temperature जो है reduce हो जाए. तो in such, ठीक है, so it will do that by favoring the reaction which absorbs heat so as to ठीक है, ऐसे रिएक्शन को फेवर करेगी जो कि हीट को अब्जॉर्ब करेगा. सो अकॉर्डिंग टू ली चार्टियर प्रिंसिपल, द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम विल मूव टू लेफ्ट और द बैकवर्ड डायरेक्शन. बैकवर्ड रिएक्शन विल स्टार्ट बिकॉज़ इक्विलिब्रियम विल मूव टू द लेफ्ट. इक्विलिब्रियम जो है, इससे क्या होगा, अगर तुमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, सो इट विल फेवर द रिएक्शन विच इज़ एंडोथर्मिक. सो इफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, इट विल फेवर द बैकवर्ड रिएक्शन.
Less HI will be formed, and equilibrium mixture will contain more unreacted H2 and I2C. If forward reaction is exothermic and we increase the temperature, backward reaction will start, so that more heat is absorbed, temperature goes back to normal, and what will happen is reactants will be more than products now. So this is what will happen. Le Chatelier's principle will try to reverse any change in equilibrium. Now experiment for temperature change. Let's look at the experiment for temperature change. For experiment for temperature changes, you have 2NO2 gas, which is brown in color. Forward reaction is exothermic, backward reaction is endothermic, gives N2O4, which is gaseous and colorless. This 2NO2 is prepared by Cu plus HNO3. So here minus delta H, because it is negative, because it is exothermic, तो यहाँ पे माइनस डेल्टा एच आता है. तो ये कंटेनर है हमारा, यहाँ पे H2 एट रूम टेम्परेचर, यहाँ पे जो ये 2NO2 प्रेजेंट है, इसका कलर एक तरीके से ब्राउन और कलरलेस दोनों है, बिकॉज जितना N2O4 है उतना ही ब्राउन, उतना ही NO2 भी है, तो इसका कलर जो है मिक्सड है. इफ़ यू कीप इट एट फ्रीजिंग टेम्परेचर, तो यहाँ पे हम टेम्परेचर को बहुत रिड्यूस करें तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन विल बी फेवर्ड. सो forward reaction will happen and N2O4 will form, क्योंकि यहाँ पे हमने temperature कम कर दिया, so we have to increase temperature, we have to add heat, so we choose exothermic reaction. Okay, then if you put it in very, let's say very hot water, then what will happen is the brown color of NO2 will be formed, because here endothermic reaction will be favored, because यहाँ पे hot temperature है, तो exothermic reaction नहीं favor होगा, endothermic, जिससे heat अंदर चली जाए, है ना, absorb हो जाए, तो that will be favored, so backward reaction will be favored. This is a sealed test tube with NO2 gas brown and dark. इसमें हमने एक एक्चुअली NO2 gas and N2O4 का mixture at equilibrium. When temperature decreases, it wants temperature high, hence it moves forward, which is exothermic. When temperature increases, it wants temperature to be low, hence it moves backward, that is endothermic. अगर आगे से पीछे वाला reaction exothermic, then पीछे से आगे वाला reaction endothermic. Understood? If forward reaction is exothermic, backward reaction will be endothermic, है ना. There's also an experiment for concentration change. We will see it right now. Endothermic reaction.
Next, let's see experiment for concentration change. First of all, Fe3 plus, it is yellow in color. It's aqueous and is yellow in color. If you add sulfur cyanide to it, which is colorless, it gives ferrous sulfur cyanide 2 plus, which is deep red in color. In the above reaction, equilibrium can be shifted in either forward or reverse reaction by adding reactants or product. The equilibrium can be shifted in reverse direction by adding reactants that remove Fe3 plus or SCN minus ions. Example, oxalic acid. If you want to shift it to in the reverse action, backward direction अगर shift करना है, तो you can reduce the reactants, है ना? You can just experiment it by yourself. You can reduce the concentration of Fe3 plus and SCN minus ions compounds. इनको हटा पावे इतना क्यों खासते हो? By adding oxalic acid. H2C2O4 reacts with Fe3 plus ions to form stable complex FeC2O4 3 minus, thus decreasing concentration of free Fe3 plus aqueous. In accordance with the Le-Chatelier's principle, the concentration stress of removed Fe3 plus is relieved by dissociation of ferrous sulfur cyanide 2 plus to replenish the Fe3 plus ions. Because the concentration of FeSCN 2 plus decreases, the intensity of red color decreases. देखो यहाँ पे जो था, यहाँ पे it is yellow in color, this is colorless and this is deep red. तो अगर इसकी concentration कम हुई तो intensity of red will decrease. इसकी concentration बढ़ी तो yellow and colorless intensity will increase. Fine, पर इतना मत खासो. Addition of aqueous HgCl2 also decreases red color because Hg2 plus reacts with SCN minus ions to form stable complex ion HgSCN42 minus. Removal of free SCN minus ions shift equilibrium in equation from right to left to replenish SCN minus ions. तो क्या हो गया, यहाँ पे SCN minus कम हो गए तो अगेन reactants फॉर्म होने लग जाते हैं, है ना? तो अगर तुमने रिएक्टेंट्स कम कर दिए तो प्रोडक्ट्स कम हो जाएंगे. रिएक्टेंट्स कम कर दिए तो प्रोडक्ट्स जो हैं और जो रिएक्शन है वो रिवर्स डायरेक्शन में चला जाएगा. इफ़ यू इंक्रीज प्रोडक्ट्स कम कर दिए तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलता रहेगा. एडिशन ऑफ पोटेशियम थायोसाइनेट ऑन द अदर हैंड इंक्रीजेज द कलर इंटेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन एज इट शिफ्ट्स द इक्विलिब्रियम टू द राइट. ये होता है टोटल में. ऑल इन ऑल दिस इज़ व्हाट हैपन्स. ठीक है, दिस इज़ कॉन्सेंट्रेशन का रिएक्शन. Okay, then we have ionic equilibrium, we have this whole thing we'll read.